Welcome back to another episode and another video of explaining something which is a must know, but quite easily we tend to forget it, or sometimes we just don't understand it and keep revising it and mugging it up. But if you, this is something if you don't understand, then there are some small component of this basic concept which will be used in patho medicine everywhere, immunology questions, and there are many very frequently asked questions. These are very frequently asked questions, so we need to understand this. So let's start differentiating and learning all about the immunity aspect in this video. What we are going to be focusing is very high yield, very exam oriented approach, clubbing it with concept so it stays in our memory for longer period and longer time. So let's try dive right into it. Okay. So what is immunity? Immunity के दो parts हैं. This there is cell mediated immunity, acquired immunity. Acquired immunity is also known as humoral immunity. Okay. So when we listen to these two things, cell mediated immunity, acquired immunity, what we need to understand is cell mediated immunity सुनते ही we should know that these there for immunity purpose, cells will be formed. All right, cells will be responsible for the immunity function. In case of acquired or humoral immunity, the antibodies will be formed, and these would be responsible for the immune purpose. All right, so this is something basic which you need to understand very in the beginning, so it gets easier upon it. One more thing, if you want to add, you can remember that helper T cells. T cells are two types of T cells, killer T cells and helper T cells. So here what we'll be using is killer T cells. All right. Killer T cells will come here and helper T cells will come here. So this is just for your basic understanding upon which we will start building up the concept and further informations that we need to remember. So let's assume there is an organism, right? This is the organism. Okay? And this is the antigen on the organism. When this organism enters our body, what happens is APCs, antigen presenting cells. They take up this antigen and present it to T cells. Okay, T cells में they present it to T cells where there are two, which is CD8 T cells and CD8 and CD4. How they are presented to CD8, CD4 is by MHCs. Okay, so here you can also add on this table will really help you later on. So just keep adding on and revise it 2-3 times and it would be easier. So T cells CD8 के लिए we would require MHC1, and for CD4 there is MHC2. Okay, now your antigen has reached CD8 and CD4. So let's first see what happens when the antigen reaches CD8. So CD8 in itself is the killer T cells, right? It acts directly upon the antigen and kills it. इसकी कहानी यहीं तक है. What we need to understand more about is about CD4. Hmm? Now CD4 cells जो हैं, they are also known as helper T cells. Helper T cells because they don't directly go and kill the organism. They secrete or they help induce antibodies. They help form antibodies. That's why they are called helper T cells. Now, this would go to further two places. Okay? There it is CD4TH1, CD4TH2. Okay? Now, to reach CD4TH1, CD4TH2, the two activations will happen. If CD4TH1 is activated, what is produced is macrophages and NK cells, that is natural killer cells. Now, these are also
cells. ठीक है. So whatever we studied up till now, जो भी हमने अभी तक देखा है, that all comes under cell mediated immunity. That is, these are all till here. Alright, till this is cell mediated immunity. यहाँ पे जो भी आपका this तरफ जा रहा है, that is cell mediated immunity. What are the cells important in cell mediated immunity? Which cells cause cell mediated immunity? Macrophages, NK cells, and your killer T cells, which is none other than your CD8. ठीक है. This is your cell mediated immunity where cells kill the organism. When the cells are not killing the organism, the other part of uh, the discussion is humoral immunity or acquired immunity. What is going to happen with CD4TH2 is that CD4TH2 activates B cells. All right. Activated B cells are none other than, let's write it in red so we remember it. Activated B cells are called as plasma cells, right? And this plasma cell is responsible for antibodies formation. ठीक है. And these antibodies formation falls under none other than आपका, this is nothing but acquired or humoral immunity. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया? Let's review once again. Okay, let's review quickly once again so you remember it. Organism आया, organism आया, organism के ऊपर एंटीजन है, एंटीजन को पिक किया हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, टी सेल्स तक लेके गया, टी सेल्स CD8 की तरफ लेके जाएगा MHC1, CD4 की तरफ लेके जाएगा MHC2. ठीक है. CD8 की तरफ लेके गया MHC1 और क्या बनाया? किलर टी सेल बना दिया. फिर CD4 की तरफ MHC2 लेके जाएगा और क्या, ये CD4 का दूसरा नाम क्या है? हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल से हम समझ रहे हैं कि हेल्प करता है, मतलब हमारा एंटीबॉडीज भी यहाँ बनने में हेल्प करेगा. ठीक है. CD4 आपको फर्दर अलोंग लेके जाएगा कहाँ? CD4TH1 में या तो TH2 में. अगर TH1 में लेके गया है एक्टिवेशन प्रोसेस, तो मैक्रोफेजेस बनेंगे और NK सेल्स बनेंगे. दोनों ही क्या है? सेल्स हैं. दोनों ही क्या करेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करेंगे. ठीक है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अगर CD4 हेल्पर टी सेल्स जो है CD4TH2 में लेके गया एक्टिवेशन, तो बी सेल्स के पास जाएगा, बी सेल्स एक्टिवेट करेगा. एक्टिवेटेड बी सेल्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल्स कहते हैं. प्लाज्मा सेल्स से क्या रिलीज होता है? एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं. अगर इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का फंक्शन आ रहा है, एंटीबॉडीज जो है इम्यूनिटी कॉज करा रही हैं, तो क्या टाइप की इम्यूनिटी हो जाएगी? ह्यूमरल इम्यूनिटी या सेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है. दीज आर द बेसिक बेसिक थिंग्स. अब क्वेश्चंस इस पे से एड ऑन क्वेश्चंस क्या आते हैं? एड ऑन क्वेश्चंस के लिए ये है कि आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देयर आर सर्टेन साइटोकाइंस रिक्वायर्ड. ये जो आपका टॉपिक है, बेसिकली इस इम्यूनिटी के लिए सर्टेन साइटोकाइन, क्वेश्चन क्या आएगा? साइटोकाइंस पे आएगा. साइटोकाइंस वुड बी रिक्वायर्ड, है ना. साइटोकाइंस तीन तरह के होंगे आपके, क्या क्या? इंटरल्यूकिन, IFN और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. ठीक है. हमें क्या याद रखना है? कौन सा साइटोकाइन कहाँ अग्रेसिव हो रहा है, कहाँ एक्ट कर रहा है, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. तो उसके लिए ले लेते हैं रेड कलर बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. तो पहला आपका क्या होगा? जब CD8 एक्टिवेशन होगा पहला प्रोसेस में, तो कौन सा साइटोकाइन एक्शन कराता है? कौन सा साइटोकाइन एक्शन करा रहा होगा? कौन सा साइटोकाइन हेल्प कर रहा होगा? IL-2. ये है क्वेश्चन. फिर CD4 का एक्टिवेशन कौन करा रहा होगा? IL इंटरल्यूकिन 1. दिस इज अनदर क्वेश्चन. ठीक है. अब
हर प्रोसेस पे एक एक एक्टिवेशन हो रहा है। अब CD4TH1 का एक्टिवेशन कौन करा रहा होगा? IL-12। CD4TH2 का एक्टिवेशन कौन करा रहा होगा? यहाँ पे दो है इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ये एक्टिवेशन करा रहे हैं। ठीक है, देर इज वन मोर कि मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन कौन करा रहा है, सो इट इज IFN गामा, ये एक्टिवेशन करा रहा है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच गेट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हमने इस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक थिंग कि कैसे क्या हो रहा है। देन अपॉन दैट वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड सम थिंग्स विच आर कि कौन से सेल के लिए क्या एक्टिवेशन लग रहा है, कौन सा सेल कहाँ जाके निकल रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, हेल्पर टी सेल्स कौन से हैं, किलर टी सेल्स कौन से हैं, प्लाज्मा सेल्स कौन होते हैं, प्लाज्मा सेल से क्या सिक्रीट होता है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या क्या आता है, एक्वायर्ड या ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या क्या आता है। ऑलराइट, सो these are very important and we often get confused, even I used to get confused a lot. तो and remembering it is very important, it's very important for your base formation. नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे इम्यूनिटी के क्वेश्चंस में। जब भी आईएल्स पूछना शुरू करेंगे ना, इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड यू वुड मार्क द आंसर्स रॉन्ग एंड यूल ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक अगर आपने ठीक से नहीं इसको समझा है तो। So I hope this would help a lot of you in your profs and in your FMGs and in your further exams, no matter what exam you give. So this is something very important. You need to understand this. And thank you so much for watching. And if you like it, please subscribe and comment on the video. And if there are any other topic which you think is quite confusing and you keep forgetting, please put it in the comment box and I'll try to share the video regarding it. Thank you so much.